हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, एक नॉर्मल सा, सीधा सा और बहुत ही आम ट्रेडर, लेकिन आर्म्ड विद लॉट ऑफ रिटेल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एंड ए कप ऑफ टी। आप मुझे सुन रहे हैं ट्रेड इन्वेस्टर पर, जहां हम बातें करते हैं बिल्कुल बेसिक्स टू ब्रिलियंस की। सो दोस्तों, वी आर बैक विद अनदर फ्रेश, मसालेदार और बिल्कुल डेटा पैक्ड एपिसोड ऑफ बल्कि बुलिश ब्रेकआउट सीरीज, जहां हम लाते हैं आपके लिए एक डिटेल, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दो स्टॉक्स विच आर शोइंग साइंस ऑफ फ्रेश रैली। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, TCI is a leading logistic and supply chain solutions provider engaged in freight transport, integrated supply chain management, and coastal shipping through seaways. With diversified operations across road, rail, and sea, TCI serves critical sectors like manufacturing, retail, and infrastructure, ensuring resilient demand and broad market reach. A robust mid-cap logistic player with a strong national footprint, their market cap stands at 9,800 CR and the current price trading at 1,257. 52-week high of 1,309 and low 842. Stock is trading close to its all-time high, reflecting strong momentum and growing investor interest. PE stands at 23.8 vis-a-vis industry PE of 29, priced at a discount to the industry average, indicating potential value with room for re-rating as fundamental strength. And PEG ratio stands at 1.07, fairly valued relative to its earnings growth. Neither too expensive nor a deep value play. Price to book is around 4.55, reasonable for a logistic business with asset-heavy operations and brand strength. Profitability, ROC stands at 20.5 and ROE stands at 19.8. Strong capital efficiency, well above long-term averages, signaling sustained operational performance. ROC trend has been 17.71 for 10 years, 20% over 5 year, and 20.9% over 3 year. Versus the current ROC at 20.5. Consistent improvement in capital efficiency over the decade, reflecting better asset utilization and margin management. ROE 10-year average is at 18% and currently at 19.8%. Shareholder returns have steadily improved, supporting high valuations. Growth and earnings quality. Sales growth 5% CAGR at 10.6. Healthy double-digit growth in a competitive sector, driven by expansion in supply chain and seaways segments. PAT annual at 412 CR, strong profitability with earnings growth supporting investor confidence. Cash flow from operations at 359 CR, high quality earnings with robust cash generation, indicating efficient working capital management. Balance sheet and ownership. Debt to equity stands at 0.11, low average, ample headroom for future expansion and resilience during downturns. Promoter holding stands at 68.8% without any pledging. High promoter confidence and stability in ownership structure. FI holding at 3.17%, DI holding at 12.4%, growing institutional interest with scope for further accumulation as performance sustains. बात करें टेक्निकल्स की, TCI is currently trading just below its 52-week high of 1,309, showing clear signs of strong momentum and accumulation. The stock has established a solid support base near 1100 with the resistance at 1309. Sustained trading above this resistance could trigger a fresh breakout. Short and mid-term moving averages are trending upwards, confirming bullish sentiment. Volume patterns indicate steady buying interest with no signs of excessive volatility, suggesting a healthy uptrend rather than speculative spikes. A decisive close above 1310 backed by strong volumes may confirm a breakout and attract further institutional flows. Why this stock is breakout worthy? Trading near all-time highs with improving fundamentals and sector tailwinds. Strong capital efficiency, low debt, and consistent earnings growth make it a quality compounder. A reasonable valuation compared to industry peers with scope for re-rating as growth sustains. High promoter holding, robust cash flows, and increasing institutional participation add to its appeal. Technical setup supports the possibility of a breakout if the stock sustains above resistance levels with volume. Ingersoll Rand India Limited. Ingersoll Rand India is a key player in industrial air compressor manufacturing and also offers services like installation, commissioning, and maintenance. A niche engineering company catering
to critical infrastructure and manufacturing. Across industrial sectors, sticky demand and high margins are one of the prominent features for this company. बात करते हैं valuation and price metrics की. A high value mid cap stock operating with large cap financial strength. Investor confidence reflects in price resilience. 52-week high and low stands at 4,700 and 3055. It's trading near its all-time highs, clear sign of strong institutional demand and momentum building for a breakout. Stock P slightly above industry average. Markets are willing to pay a premium for its quality and operational excellence. PEG ratio stands at 1.88. The valuation is not cheap, but it's justified by consistent earnings growth and margin leadership. Price to book around 21, a very high ratio. However, it suggests investor confidence in future earnings rather than asset backing. A classical example of quality premium. बात करें probability and return ratios की, तो ROCE stands at 60 while ROE stands at 45%. Phenomenal capital efficiency. Among the best in manufacturing space, every rupee 100 deployed generates rupees 60 in operating profit. ROC trend has been over 10 year 28%, over 5 year 42% and over 3 year 51%. Currently it is 60%, a text compounding business. Every year it's getting more efficient. बात करें ROE की, on a 10-year average, it is around 17.9 versus currently 45%. Massive jump in shareholder returns over the decade. This is what long-term investors generally chase. Growth and earnings quality. 5-year CAGR of sales growth stands at 13.6, not hyper growth but consistent double-digit growth in a mature sector. Very attractive for institutional investors. PAT annually stands at 268 CR, solid net profit given its capital light and service-based model. Cash flow from operations stands at 265 CR, almost identical to net profit. Extremely high earnings, quality and clean accounting. Recently got ex-dividend on 8th of July, giving out 25 rupees per share. Balance sheet and ownership. Debt to equity stands at 0.02, virtually debt-free, no interest burden, high return on capital. Promoter holding starts at 75% without any pledging. High promoter skin in the game signals long-term confidence and business stability. FIA holding 1.88%, DIA holding 7.12%. Institutional holding is a moderate, still room for FIA accumulation if the momentum continues. बात करें technicals की, the stock is currently trading just below its all-time high of rupees 4980 and has shown strong price resilience, indicating robust institutional demand and momentum. On the charts, Ingersoll Rand India has key support around 3761 and resistance at 4278 in mid-term and 4980 in long-term. The short-term trend is slightly bearish, but in mid and long-term trends remain neutral, suggesting the stock is consolidating after a strong run-up and could be setting up for a fresh breakout if sustains above these resistance zones. Volatility is moderate and the stock is showing good volumes over here, which aligns with a healthy move. If the price crosses and holds above 42504450 levels with volume, it may confirm a fresh rally and attract further institutional interest. Why the stock is break-worthy? Trading near all-time highs backed by massive capital efficiency, ROC of 60% is elite level. Valuation is rich but backed by growth, margins and cash flows. A classic, expensive but worth it stock. Zero debt, high promoter holding and almost equal PAT and cash flows shows business quality. Strong momentum plus increasing operational efficiency makes a compelling candidate for your breakout watch list. All these factors align with the volumes which were seen today and price close giving a closing at 4178. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. मार्केट में जो कोई मेजर फायरवर्क्स आते हैं हम आपके लिए लेकर आते हैं. अगले कुछ दिनों में Q1 अर्निंग्स और यूएस ट्रेड पॉलिसी पर फोकस रहेगा, तो टाइट बैठिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. आपको क्या लगता है, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा या फिर कंसोलिडेट करेगा? कमेंट्स में बताओ. दलाल स्ट्रीट के हर प्राइस एक्शन को हम बनाएंगे थोड़ा फन, थोड़ा सिंपल, सिर्फ बल्कि बुलिश ब्रेकआउट्स के साथ. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई कसम से सब्सक्राइब और लाइक कर देना.
दोस्तों, हम अपने चैनल पर लाते हैं सिर्फ इन डेप्थ रिसर्च कंटेंट एंड ये हमारी पक्की उम्मीद है कि हम एक दिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन ज़रूर छुएंगे। सवाल ये नहीं है कि हम वो मार्क हिट कर पाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि कब कर पाएंगे। और इस जर्नी में हमें आपका साथ चाहिए। क्या आप हमारी इस जर्नी में साथ देंगे? अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ भी शेयर करें जिनको फाइनेंशियल दुनिया की नॉलेज की ज़रूरत है। ओनली इफ़ यू केयर अबाउट देम बिकॉज यू नो वी डू। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ और हमेशा मस्ती में रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आप ट्रेडिंग कर रहे हो या सिर्फ गेस कर रहे हो? क्योंकि डिफरेंस समझना जरूरी है, इसलिए हम लेकर आए हैं ये मास्टर क्लास सीरीज सिर्फ आपके लिए। वेलकम टू ट्रेड इन्वेस्टर, जहां हम सीखते हैं इन्वेस्टिंग का असली साइंस। इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गैम्बल, इट्स अ स्किल, और वो स्किल हम यहाँ बिल्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम बेसिक्स टू ब्रिलियंस। मार्केट में पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों का बनता है जो गेम को समझ जाते हैं। लेकिन सवाल है कि आप भी तैयार हैं इस गेम को मास्टर करने के लिए? ये मास्टर क्लास सिर्फ नॉलेज नहीं, एक मिशन है इंडिया के हर रिटेल ट्रेडर को एम्पावर करने का, सोच समझ के इन्वेस्ट करने का। हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ एक धांधली का खेल है, जैसे सबके पास कोई सीक्रेट सॉस है और आप बस स्टॉक्स को उनके हाई पे खरीद कर लो पे बेच रहे हो? क्या आपको हर दिन शॉर्ट टिप्स और महंगे कोर्सेज से बॉम्बार्ड किया जा रहा है जो चांद तारे तोड़ने का वादा तो करते हैं बट मिलता कुछ नहीं? हाय एवरीवन, मैं हूँ आपका अपना रिटेलर दोस्त और स्वागत है आपका ट्रेड इन्वेस्टर पर, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। हमारा मिशन सिंपल है, आप जैसे हर इंडियन स्टॉक मार्केट रिटेलर को एम्पावर करना और सही राह पर कदम से कदम मिलाकर साथ चलना। हम आपको इतना नॉलेज और कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि आप इस मार्केट को सक्सेसफुली नेविगेट कर सके और फिर कभी भी पेड टिप्स या महंगे कोर्सेज पर डिपेंड न करना पड़े। मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ और सच में समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं प्रॉब्लम से गुजरा हूँ। मेरी अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी 2017 में शुरू हुई थी और विश्वास करिए एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग थी। मैंने भी काफी गलतियां की, उन्हीं ट्रैप्स में फंसा और वही फ्रस्ट्रेशन महसूस की, लेकिन धीरे धीरे लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट से, बहुत सारी बुक्स पढ़ के और घंटों वैल्यूएबल पॉडकास्ट और वीडियोस देखकर मैंने प्रोग्रेस करना शुरू किया। मैंने सीखा कि असली में क्या काम करता है और सबसे जरूरी क्या नहीं करता। ठीक वही चीज हम आपको अचीव करने के लिए यहाँ है, ताकि आप मार्केट के नए सोल्जर नहीं, स्मार्ट सोल्जर बन पाए। ये स्ट्रेटेजी अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की बात है, ना कि बस आंख बंद करके दूसरों को फॉलो करने। अब एक छोटा बट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इस चैनल पर शेयर की गई सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले प्लीज अपनी अच्छी रिसर्च जरूर करें या किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मार्ट सोल्जर बनना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल लेना चाहते हैं, तो उस लाइक बटन को प्लीज दबाइए। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है, और डेफिनेटली हमारे चैनल यानी ट्रेड इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट सच में हमें वैल्यूएबल और फ्री कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करेगा।